Hello to all my lovely seventh graders. Welcome to Unacademy. We can all now ace our exams using Unacademy Plus an iconic subscription. And yes, as you can see it on my screen, right? And I will break the great news to you that is कि अब आपको अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 10% ऑफ मिल सकता है अगर आप मेरा कोड NA01 यूज करते हो. यस, whenever you are taking the plus subscription, make sure कि आप मेरा कोड NA01 यूज करते हो सब्सक्रिप्शन के लिए ताकि आपको सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 10% मिल जाए. Okay, right. As you all know कि I am here from my channel Socio Ride with Nehal. हमारे साथ हमारी इस जर्नी में in this ride we have not had a lot of classes. तो जो भी viewers हमारे साथ नया join कर रहे हैं नए join कर रहे हैं, firstly I would request all of you to go back and watch the previous videos. But for your convenience, I will quickly introduce myself. I am Nehal Agarwalla. I have completed my graduation from Lady Shri Ram College for Women, which is the best humanities college in India, one of the best humanities colleges in India. After that, I completed my postgraduate diploma in liberal studies, and I've had quite an experience of teaching children, middle school and high school children in social studies across various grades and boards. Yes, I've also taught across various boards. So I hope that both of us can make this journey really, really enriching. And both of us, I mean, you and me, both of us can make the most out of this social ride that we are on. ओके, सो फॉर द वंस जो मेरे चैनल पे नए हैं एंड जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का क्लास 7 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, क्लास शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशल क्लासेस के बारे में पता लगता है, मेंटी कोड्स के बारे में पता लगता है. सो इफ यू हैवंट ऑलरेडी जॉइन द टेलीग्राम चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक जहाँ पे लिंक अटैच्ड है टेलीग्राम चैनल के लिए, वो लिंक यूज करके quickly join the Telegram channel for Unacademy Class 7 so that you don't miss out on any class by our amazing educators at Unacademy Class 7 channel. Okay, so Unacademy has introduced this very, very exciting feature for you all. I'm sure all of you love prizes, right? And Unacademy is here to give you a prize. And when do you get the prize? अगर आपको एक वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट या गलत कंटेंट दिखता है तो आप उस कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हो. एंड हाउ कैन यू रिपोर्ट इट? देयर इज a link to a form that is attached in the description box. Use that link, open that form, and report that inappropriate content. And if you are the first one to report it, we at Unacademy give you a prize. Yes, अगर आप कोई भी वीडियो में कोई भी inappropriate content spot करते हो तो make sure to report it. Okay, Unacademy has also come up with this very, very exciting feature called Unacademy Ask a Doubt. Now you can ask unlimited doubts to the educator at any point of time using this very unique Unacademy Ask a Doubt feature. And your doubts will be clarified in, you know, instantly. At least we try to do it. And you would receive the most apt answers to all the curious questions that are coming to your mind. And this doubt will be solved using whichever language you're comfortable with. Hindi, English, जो भी आपको बेहतर लगता हो, लैंग्वेज जो इसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल है, the educator will try and solve your doubt in that very medium. तो साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि आपको स्कूल से होमवर्क दिया जाता है, आपके पास और होमवर्क होते हैं, but you find it difficult to solve those questions in your homework, or you don't know the approach to do it. You can use this very exciting feature of Unacademy, ask a doubt, and get all the assistance and get all your doubts cleared. Okay, so here's the Unacademy Plus subscription, which has various exciting features so that we can prepare you to ace your exams, right? And what are these features? One, आपको unlimited content provide किया जाता है by some of our top educators of India on this platform at Unacademy, and आपको इन सब content के ऊपर unlimited access होगा.
and so you can access this content from the comfort of your home whenever you want to. साथ ही साथ there are also these live doubt clearing sessions and answer practicing sessions, because we at Unacademy firmly believe कि आपके मन में जितने भी questions आ रहे हैं, none of it should go unanswered, because all questions are important. साथ ही साथ we exhaustively try to cover all the syllabus that's a part of your CBSE, so that we make sure that you and we can together prepare you to ace your exams. We give you personalized mentorship, guidance, study material, notes in the form of PPT. Also, there are practice quizzes, test series, and batch courses, because it's very important कि आप और हम ये देख पाए कि आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है. Is there some part that you need to revise? Is there some part that you need to get better at? So इसीलिए through quizzes, through mock tests, through test series, through MCQs, we try to test this so that you can also, focus on those areas where you think that you're not that well prepared. Okay, so here's the pricing list for Unacademy subscription. जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि different months के packages के लिए the pricing is different per month, right? But as you can see, the funda is very, very simple. The more number of months that you subscribe for with Unacademy, the more are the benefits, but the lesser is the price. ऑल्सो अगर आपको पूरा सब्सक्रिप्शन एक साथ में पे करके नहीं लेना, Unacademy has also introduced this no cost zero interest EMI फीचर, जिससे आप मंथली पे करके भी अपने सब्सक्रिप्शन को अवेल करते रह सकते हैं. Again, you get 10% off on this subscription if you use my code NA01. So don't forget to check out the various subscription plan and choose the best one for yourself right after this class. ओके, साथ ही साथ अनअकैडमी के पास एक ऊपर लेवल का भी सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे नहीं मिलते, विच इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में हम आपको आपके लिए एक पर्सनल मेंटोर देते हैं, एंड दिस मेंटोर ट्राइज टू प्रिपेयर अ प्लानर फॉर यू कि क्या आपको बेस्ट सूट करेगा, व्हाट काइंड ऑफ स्टडी प्लान शुड बी क्यूरेटेड specifically आपके लिए, so that we assure that nobody can take you back from acing your exams by connecting with the Unacademy iconic subscription platform. साथ ही साथ we also prepare weekly reports for you, and these are very detailed reports to track your progress. There are live doubt clearing sessions, and these mentors, these personal mentors, also address any and every concern that your parents might have. In addition to that, practice quizzes, test series, answer practicing, MCQs, all of this are also there, that happens live at the iconic subscription package of Unacademy. So make sure to check out some of these very cool features that are provided to you by purchasing the iconic subscription at Unacademy. And here's the pricing list for the iconic subscription. Again, the funda is still the same. The more number of months that you subscribe for, the more are the benefits, but the lesser is the cost. So go check out these subscriptions. If again, it is available at zero cost, no interest EMI. If you want, you can avail it on the basis of your convenience by paying, part by part money also. So great. I hope now you're all excited, and you all don't forget to check out all of these very cool features at Unacademy and take the best subscription plan for yourself. Again, we at Unacademy have introduced this very amazing and cool feature for those who take the iconic subscription, that is one-on-one live homework help. Yes, it's kind of a personal tutor and mentor for you who will sit with you and try to solve all the doubts and try to solve the homework questions with you all, clarify all your concepts and discuss them with you to ensure कि आपके जितने भी foundations हैं सब clear है. So what are you waiting for? Go check out the Iconic and Plus subscription. Let's ace it together. Okay, welcome to the premiere video. We are here at 3 p.m. trying to solve the NCERT question and answers of Civics Chapter 1 on equality. हमने आज सुबह ही इस चैप्टर को इन डेप्थ डिस्कस किया था. मैंने आपको एक लेक्चर दिया था और इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था.
अब हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाए, रिकलेक्ट हो जाए जैसे जैसे हम ये क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करते हैं। So please pay attention. If you want, get your NCERT books, open the questions that are there, and let's get on this social right with educator Nehal Agarwalla. Okay, so अगर आप अपना बुक खोलोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन इज, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज इंपॉर्टेंट। अगर आप रिकॉल करोगे तो हम वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स या वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी स्टडीड अबाउट इन दिस लेक्चर वाज अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। तो इसमें पूछा गया कि एक डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज महत्वपूर्ण क्यों है। व्हाट इफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज एग्जिस्ट ही नहीं करता एक डेमोक्रेसी में, राइट? सो सबसे पहले वी शुड बिगिन, अगर आपको एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव और फुल मार्क स्कोरिंग आंसर लिखना है तो सबसे पहले यू शुड बिगिन बाय डिस्कसिंग, बाय टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज. So in India, every citizen above the age of 18 has the right to vote, irrespective of what religion they belong to, what is their educational background, what caste they are, or whether they are rich or poor. Also, each vote has the same value. This is called universal adult franchise. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट गारंटी करी गई है टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. हर भारतीय नागरिक को ये राइट गारंटी करी गई है कि अगर वो 18 साल की उम्र से ऊपर है देन दे हैव द राइट टू वोट, राइट? चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, दैट इज देयर रिच और पुअर, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो. मैंने आपको बताया था द डिफरेंट कास्ट दैट आर देयर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित. नो मैटर विच कास्ट यू आर, आप एजुकेटेड हो नहीं हो, आपका क्या जेंडर है, इफ यू आर मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, वट एवर इज इट, it does not matter till the time you're 18 and you are a citizen of India. सिर्फ ये दो conditions के तहत you can cast your vote and you can select और elect, I would say, कि कौन पार्लियामेंट में जाकर बैठेगा and who will make decisions for you, right, on your behalf based on the vote जो आपने डाला है. एंड हर वोट का एक वैल्यू, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर रिच और जस्ट बिकॉज आपका एजुकेशन बेटर है तो आपका अगर एक वोट डालते हो तो वो दो काउंट होगा. नहीं, एवरी वोट हैज द सेम वैल्यू, एवरी वोट इज काउंटेड एज वन. तो ये दो पॉइंट्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में. वन, यू शुड बी अबव द एज ऑफ 18 एंड इट डजंट मैटर कि आप कौन से कास्ट, क्लास, जेंडर से हो. Till the time you're 18, you're allowed to vote, and every vote has the same value. That is universal adult franchise. And in a democracy, universal adult franchise is important because ये equality के principle पे based है. इसके अंडर सब लोग, इसके तहत संविधान में सब लोग are treated equally. कोई भेदभाव नहीं किया जाता. And in a democracy, as we know, equality is a very important principle. So these are the two aspects that you have to cover. Pehle, describe what is universal adult franchise, and then it is based on the principle of democracy, and democracy tries to promote equality. Okay, I hope that is clear. If you have any doubts, don't forget to leave your doubt on the comment section below. Okay, now let's look at the second question. अगर आप देखोगे तो आपके बुक के सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट पेज में ये बॉक्स दिया गया, राइट, which talks about Article 15 of the Indian Constitution. So now the question is, reread the box on Article 15 and state two ways in which it addresses inequality. ये Article 15 को ध्यान से पढ़िए and you basically need to talk about that how this specific article of the Indian Constitution tries to address inequality, right? कि ये भेदभाव को कैसे एड्रेस करती है. So what is Article 15 of the Indian Constitution? Article 15 states that prohibition of discrimination, that किसी भी तरह का discrimination या भेदभाव नहीं हो सकता on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth, right? So on all of these grounds, no matter आप कौन से धर्म से है, no matter आपका race क्या है, right? If you आप गोरे हैं, काले हैं, whatever race और ethnicity, कि आप कौन से एथनिक जगह से हैं, कौन से कास्ट से है, कौन से सेक्स है, मेल है, फीमेल है, ओके, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, अगेन
इसके बेसिस पे आप पे भेदभाव नहीं हो सकता। नो मैटर आप कोई भी जेंडर के हो, कोई भी कास्ट के हो, यू शुड बी ट्रीटेड इक्वली। The state should not discriminate against you on the following grounds. Right? State ये नहीं कह सकता कि just because you're a Muslim or just because you're a Hindu or a Christian आपको ये right नहीं मिलता. No, that a state is not allowed to do that. Right? A state needs to treat all of its citizens equally. साथ ही साथ no citizen shall on the following grounds be subject to any disability, liability, restriction or condition. ठीक है, उन पे कोई restriction नहीं लग सकता, उन पे कोई liability नहीं लग सकती, और कोई डिसेबल, उनको डिसेबल नहीं कर सकता स्टेट, उनको रोक नहीं सकता स्टेट। राइट? क्या करने से? कि जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज है, जैसे कि रोड्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, शॉप्स हो गए, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गया, वो सबके लिए खुला होगा। चाहे आप कोई भी धर्म, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ, क्लास, रेस, कहीं से भी आते हो, इफ इट्स अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन और इफ इट्स अ पब्लिक प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कुछ भी, इट विल बी ओपन फॉर यू। साथ ही साथ पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रिवर्स, रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट, दैट इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट, जिसका देखरेख स्टेट खुद करती है। राइट? जिससे, जिसके लिए स्टेट आपसे टैक्स लेती है, वो या तो स्टेट चाहे उसको पूरी तरीके से मेंटेन करता हो, चाहे आधा मेंटेन करता हो, है ना। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं, कि एक प्राइवेट कंपनी और स्टेट उसे मिलकर चला रही हो, तो उन सारी चीजों पे भी हर एक भारतीय नागरिक उसको यूज कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। तो नाउ this, when you read this article 15, what are the two ways that in which it addresses inequality? So two ways are these points 1 and 2. First, that the state guarantees, right? It promotes equality and ensures that every person needs to be treated with dignity or respect, irrespective of its caste, religion, gender, race, place of birth, etc. And how does the state does it? One, by providing access to shops, public places, restaurants, whatever. Second, the use of wells, bathing guards, roads also. अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले you will write that the state tries to promote equality and ensure that the dignity of every person is maintained irrespective. Right? हमने dignity के बारे में पढ़ा था, right? That how हर इंसान का जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जो डिग्निटी होती है, जो रिस्पेक्ट होता है, और द वांटिंग ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टेट क्या करता है उसके लिए? कि जितनी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज है, और साथ ही साथ जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज है विच इज होनली और पार्टली ओन्ड बाय द स्टेट, उसके लिए स्टेट सबको एक्सेस प्रोवाइड करता है, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से आते हो। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स दैट यू हैव टू कवर। Okay, now let's look at the third point. In what ways was the experience of Om Prakash Valmiki similar to that of Ansari's? So if you would remember, इस chapter में हमने 2 case studies discuss किए थे. One was of Om Prakash Valmiki and the other was of Ansari's, right? When we were discussing about equality, तो हमने ये 2 case studies discuss किए थे. If you would remember, Om Prakash Valmiki was a Dalit who was forced to sit on the ground while everyone else उसके क्लास में चेयर टेबल में बैठ के पढ़ते थे। इनफैक्ट द प्रिंसिपल और द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल फोर्स्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप द एंटायर स्कूल। पूरी स्कूल में उसे झाड़ू लगाने को, पूरी स्कूल की सफाई करने को कहा था। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ दलित। इनफैक्ट ही वॉज नॉट इवन अलाउड टू ड्रिंक वाटर। तो काफी बुरी तरीके से, काफी अनइक्वल तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि को ट्रीट किया गया था। क्यों? जस्ट बिकॉज ही वॉज अ दलित एंड ही बिलोंग्ड टू द दलित कास्ट, who were earlier considered to be untouchables, जिनको आप छू भी नहीं सकते। And who were the Ansaris? The Ansaris, as you would recall, कि they were the Muslim couple, they were a Muslim couple, a husband and a wife, जो अपने लिए घर ढूंढ रहे थे, but they found it very very difficult to find a house because of their religion। क्योंकि वो जब भी कोई नया घर देखने जाते थे, तो लोग उनको बहुत easily घर देना नहीं चाहते थे, because they were Muslims, because of their religion। So people were very suspicious of them. People were not very welcoming just because वो एक पर्टिकुलर धर्म से आते थे। तो अब इन दोनों केस स्टडी में क्या एक्सपीरियंस आपको लगता है जो सिमिलर था? वन, कि दोनों ही केस स्टडीज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट? भेदभाव हो रहा है। और कैसे हो रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि इज डिस्क्रिमिनेटेड और ही इज ट्रीटेड अनइक्वली
because of his caste, and Ansaris are treated unequally because they are Muslims, right? And दोनों ही cases में one similarity is that they're both treated unequally. One is treated unequally because of their caste, the second is treated unequally because of their religion या धर्म. And the second similarity is both the cases, the dignity, the respect of that person, सम्मान of that person is being hurt या violated. उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनको dignity नहीं दिया जा रहा है, right? So these are the 2 points that are similar in both the case studies. अगर आप ये दोनों points अपने आंसर में cover करते हो, then full marks. Nobody can take that away from you. तो जब भी मैं ये सारे आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, राइट? बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीजें डिफाइन करती है कि एक बेटर से बेस्ट आंसर क्या है या एक गुड और बेस्ट आंसर क्या है ना? तो ट्राई टू मेक द आंसर एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल. So try to follow along with me and take note of important things जो आपको एक आंसर में include करने चाहिए. Okay, so we are already done with 3 questions. Now let's look at the 4th question. What do you understand by the term all persons are equal before the law? Right? हमने book में ये statement पढ़ा था that सारे लोग law, that all people are equal before the law, right? So why do you think that this is important in a democracy? Why do you think a particular statement is so important in a democracy? So सबसे पहले the answer has 2 parts. Okay, पहला part is the statement itself. That is आपसे 2 questions पूछ रहे हैं. One, कि आप क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट से, एंड सेकंड, व्हाई डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट. तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में से 2 पार्ट्स होते हैं, मेक श्योर दैट यू आंसर बोथ द पार्ट्स, राइट? बिकॉज कई बार एग्जाम में उसका इक्वल वेटेज होता है कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स विल बी गिवन टू द फर्स्ट पार्ट and 2 marks to the second part. So always try to answer both the parts. Don't miss out on that. Okay. So now सबसे पहले define that what do you understand that all persons are equal before the law. So equality of law means that every person, right, whether it is a domestic worker or the president of India, they have to obey the same laws which is written in the Constitution of India. So if you would recall, ये statement तब आया था when Kanta, who is the domestic worker, is standing on the same line to give vote as Chain Sahib and as the person that she works for, right? So similarly, क्या होता है कि equality of law ये होता है कि whatever laws, rules, okay, हमें कैसे पता चलता है कि as a citizen of India we have to follow certain rules या laws because those are written in the Constitution of India. And as a citizen, as someone who is born in India, आपके पास कोई choice नहीं होता, but you have to obey to everything that is written in the Constitution, right? And इस Constitution में जो भी rules और laws लिखे होते हैं, that is same for everyone. Even if you are someone who is poor, like a domestic worker, or even if you are very rich and very important, like the President of India, you have to obey the same laws. So this means that all people have to follow the same laws and are equal before the laws. So all people, irrespective of their caste, class, gender, religion, are recognized as equal. They're all considered to be equal in principle by Constitution. लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि सारे लोग इक्वल हैं, बट इस इक्वालिटी को अचीव करने में अभी भी हमें काफी दूर जाने की जरूरत है ना? अभी भी भेदभाव होता है, अभी भी पीपल आर नॉट ट्रीटेड इक्वली. क्योंकि अगर आप रिकॉल करोगे कि कांता की स्टोरी में क्या हुआ था कि ऑल्दो वो सेम लाइन में खड़ी है जो वोट देना है, बट कैसे उसके पास इतने पैसे नहीं है, सो शी नीड्स टू गो टू वर्क. भले ही उसकी बेटी बीमार है एंड उसको अपने बेटी को डॉक्टर के पास बहुत अर्जेंटली लेकर जाना है, बट स्टिल बिकॉज शी डजंट हैव इनफ मनी, शी नीड्स टू गो टू वर्क, टेक मनी फ्रॉम her boss or under whom or for whom she works, and then stand in the line in a hospital, right? Because it's a public hospital, it's a government hospital, right? बट वही अगर कोई इंसान होता जिसके पास पैसे होता और उसके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती, तो प्रॉब्ली वो इंसान छुट्टी ले लेता एंड वुड हैव टेकन हिज और हर सन और डॉटर टू द डॉक्टर, राइट? एंड शायद उसे इतनी लंबी लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ता. So although in principle and in writing everyone is equal, but we still have a long journey to cover, right? So that is one thing, that all persons are equal before the law, which means that no matter if you're a domestic worker or the president,
You have to follow the same laws, and all people, irrespective of their caste, gender, religion, they are considered to be equal by our constitution. हमारे संविधान में कोई भेदभाव नहीं होता लोगों के बीच, एंड नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, उनको गलत ट्रीट नहीं किया जा सकता on the basis of these factors, that is religion, caste, class, gender, right? And why do you think it is important? ये equality before law क्यों important है? क्योंकि equality, जैसा हमने पहले फर्स्ट आंसर में भी देखा था, that equality is one of the most important principles in a democracy, right? Because democracy क्या होती है, आपने सुना होगा, democracy is of the people, by the people, for the people. उसे democracy इसीलिए बोलते हैं, लोकतंत्र कहते हैं. लोकतंत्र मतलब कि लोग उसे चलाते हैं, राइट? लोगों के वोट के द्वारा जो मंत्री है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्लियामेंट में, वो इलेक्ट होते हैं. इसीलिए बिकॉज डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है वेयर पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो इक्वालिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इक्वालिटी मूल रूप से इट्स द सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड दैट इज व्हाई दिस इक्वालिटी बिफोर लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिए हमने कैसे डिवाइड किया. पहले भाग में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि व्हाट डज इट मीन दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. फिर सेकंड हिस्से में हमने बताया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इक्वालिटी ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर. अभी तक अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज फील फ्री टू लीव योर डाउट्स इन द कॉमेंट्स बिलो. I'll try to answer them as much as I can and as aptly as I can. I hope you're all able to follow. एंड देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका, राइट? हमने आज सुबह लेसन किया था एंड नाउ वी आर आल्सो एबल टू रिवाइज दिस. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सो प्लीज स्टे विथ मी. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन है. केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन मतलब कि इसमें एक केस दिया गया आपके सामने, एक एक केस प्रेजेंट किया गया है, एक सिचुएशन दिया गया है, राइट? एंड आपको वो सिचुएशन पढ़ के उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. Just one second. Okay. So the government of India had passed, एक एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है? और वो एक्ट क्या था? द डिसेबिलिटीज एक्ट, दिव्यांग एक्ट जिसे हम कहते हैं, ऑफ 1995. डिसेबल पीपल और स्पेशली एबल्ड पीपल आर दोज पीपल जो सही से चल नहीं सकते या जो प्रोबेबली देख नहीं सकते, एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, राइट? तो उन लोगों के बेहतरी के लिए या उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था. और इस एक्ट और इस लॉ के तहत जितने भी लोग जो डिसेबल है उनको इक्वल राइट्स मिले, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट प्रोवाइड किया. एंड इसके तहत गवर्नमेंट ने ये बोला दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी. दैट गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो डिसेबल लोग हैं, है ना, दे हैव सर्टेन कंडीशंस, बट उन कंडीशंस की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, उनको इक्वल अवसर या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलना चाहिए. इनफैक्ट गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ ऐसी सहूलियत, कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करनी चाहिए या कुछ ऐसे फैसिलिटीज क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि वो उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और उनका फुल पार्टिसिपेशन गारंटी कर सके. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. इन लोगों को, गवर्नमेंट को सबसे पहली बात फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा, एंड ताकि वो ये जो डिसेबल लोग है या स्पेशली एबल्ड लोग है या दिव्यांग लोग है, इनको वो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में दाखिला दिला सके. दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दीज मेन स्ट्रीम स्कूल. साथ ही साथ दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट जितने भी पब्लिक प्लेसेस है जिनको सरकार चलाती है, जैसे बिल्डिंग, स्कूल्स एक्सेट्रा, उनमें कुछ ऐसे कंडीशंस होने चाहिए ताकि वो उनके लिए एक्सेसिबल हो. जैसे रैंप बनने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो चल नहीं सकते उनके लिए सीढ़ियों से चलना मुश्किल है, तो उनके लिए रैंप बनाना चाहिए. साथ ही साथ समवन हु कांट सी, तो उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल आर्किटेक्चर होता है, स्पेशल फैसिलिटीज होती है इन बिल्डिंग में, ताकि वो बिल्डिंग्स इन लोगों के लिए फ्रेंडली हो सके, राइट? तो नाउ लुक एट द फोटोग्राफ. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक फोटोग्राफ दिखाऊंगी, एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज कैरिंग डाउन द स्टेयर्स. ठीक है, तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि एक लड़का है, उसको 3 सिक्योरिटी गार्ड मिलके स्टेयर्स से नीचे उतारे, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स, राइट? डू यू थिंक दैट दिस लॉ विच इज द डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1955 उसको लागू किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? एंड इफ येस और नो, अगर नहीं किया जा रहा है तो ऐसा क्या करना चाहिए इन दिस बिल्डिंग ताकि वो ये बिल्डिंग
इस बच्चे के लिए एक्सेसिबल हो सके, ताकि वो बच्चे को किसी की हेल्प लेनी नहीं पड़ सके, बट वो खुद इस बिल्डिंग को एक्सेस या यूज कर सके। ओके, तो सबसे पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इस केस और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग what what is the government expected to do to make these buildings accessible या usable? गवर्नमेंट को सबसे पहली चीज रैंप्स लगवाने चाहिए थे, राइट? बट यहाँ पे रैंप नहीं है, यहाँ पे स्टेयर्स है, राइट? तो इसीलिए जो डिसेबिलिटीज एक्ट है वो इस केस में लागू या इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बिकॉज लॉ के तहत क्या था, दैट द बिल्डिंग शुड बी मेड एक्सेसिबल टू हिम। बिल्डिंग इस तरीके से बननी चाहिए कि वो उसे एक्सेस या खुद से यूज कर सके, एंड ही शुडंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल हेल्प, right? But we see that the law is not being implemented because he requires the help of all of these security guards who actually need to carry him down the stairs. If there had been a ramp, अगर एक रैम्प होता तो इससे इन सब लोगों की जरूरत नहीं होती, he would have been self sufficient, आत्मनिर्भर, एंड वो खुद से नीचे उतर सकता था। बट क्योंकि बिल्डिंग में रैम्प नहीं है, जो इस एक्ट के तहत मैंडेटरी था, है ना, कि जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स है उस पर रैम्प होना चाहिए, इसीलिए ये एक्ट लागू नहीं किया गया है ना। इसीलिए जो बॉय की जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, वो हर्ट हो गई है, क्योंकि ही नीड्स टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स, ही नीड्स टू टेक समवन एल्सेस हेल्प, एंड ही इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी जो इस एक्ट के तहत प्रॉमिस की गई थी, राइट? तो इसीलिए उसको ऐसा फील हो रहा है कि ही इज नॉट इक्वल टू अदर पीपल। और इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए it is important that there is equality for such disabled or specially abled people, and ramps should be constructed here. So this is how we have covered both parts of the question. One, do you think that the law is being implemented here? No. और हमने reason दिया कि क्यों law implement नहीं हुआ। Second part, what needs to be done? उसके लिए हमने दिया कि अगर इस law को implement करना है तो उसके लिए ramp के construction की जरूरत है। So yes, with this we come to the end of the NCERT question and answer solutions for chapter 1. काफी कम question and answers है। I would also urge कि आप जो बाकी साइड में आपके questions होते हैं आप उनके बारे में भी सोचो, उससे रिलेटेड भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, we'll try to take some of these up in my special classes, and if not, you're free to leave your comments on the comment section below and we will try to address it. Okay, we'll try to discuss them. I hope कि this was really helpful and useful for you. आपका अच्छे से revision हुआ and you could relate to whatever we have discussed in the chapter. And now I hope कि आप सब prepared हो to ace your exams with these NCERT solutions. Okay, so before I leave, I really want to sort of tell you about this very special feature of Unacademy, which are special classes which are absolutely free. My schedule for special classes will be launched very soon. मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट करने वाली हूँ, तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो एंड ज्वाइन so that you can be a part of the special classes, जहाँ पे आप मेरे साथ रियल टाइम पे इंटरैक्ट कर सकते हो यूजिंग चैट, इमोजीज। there's a question tab जिससे आप अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। I will answer your questions. There'll be live poll, live quizzes, there'll be a leaderboard. So get your friends along to these special classes so that you can see कि आप अपने friends से कितने आगे या पीछे हो through all of these polls and fun quizzes and everything else that we'll be doing together in special classes at Unacademy, which is absolutely free. So make the most out of this, okay? ऑल राइट, साथ ही साथ अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे अभी फेस्टिव ऑफर चल रहा है टिल 25th अक्टूबर। तो मेक श्योर दैट यू चूज द बेस्ट प्लान एंड अवेल दिस अमेजिंग ऑफर जो आपके पास 25th अक्टूबर तक अवेलेबल है, राइट? कि अगर आप 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको फ्री 4 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 24, 36, 48 मंथ्स का लेते हो, फ्री 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। साथ ही साथ 60, 72 या 84 मंथ्स के लिए लेते हो तो फ्री 8 मंथ सब्सक्रिप्शन। साथ ही साथ आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है इसके ऊपर, एंड दिस ऑफर इज वैलिड only for the first 500 subscribers. So what are you waiting for? Quickly go and take this subscription and make the most out of this. Okay, you can also unlock free content with my code. Go to Unacademy Learning app, download it from your Google Play Store, log into the app, select goal जो ऐप में होगा, उसके बाद मेन्यू बटन में क्लिक करें, लेफ्ट कॉर्नर पे स्पेशल होगा, then use the invite code, copy the code to unlock the free plan.
Okay, साथ ही साथ Unacademy provides all the students with an amazing opportunity to win scholarships worth rupees 1 crore. These scholarship tests are held every Sunday at 12 p.m. because Unacademy firmly believes in the power of education and want to deliver the best education possible to you and the best support जो हमारे तरफ से possible है. इसीलिए we provide these combat scholarship tests for you every Sunday 12 p.m. So अगर आपने enroll नहीं किया है, don't forget to enroll on these Unacademy combat tests. 30 question 45 minutes. आप इस टेस्ट को फ्री अपने एंड्रॉइड ऐप या वेब लिंक से भी ले सकते हो. So make sure that you spread it among everyone and enroll yourselves for this amazing scholarship test. Okay, that's it from my side. Download the Unacademy app if you haven't already. Check out the Plus and Iconic subscription plans. Choose the best plan for yourself and make sure to avail those offers before 25th. Only if you're one of the 500 subscribers. So what are you waiting for? Please go quickly. Get flat 10% off using my code NA01. I hope you enjoyed the lesson. So please like, share, and subscribe at the channel and share it with people so that others can also benefit from it. I will see you for another such premiere session every day at 3 p.m. and I go live on the channel to get you all on a social ride at 10 a.m. every day. To see you then also. Let's crack it. Let's ace it with Unacademy. Bye bye. See you. Have a wonderful evening ahead.